प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़का था दीवाना सा, एकदम शाहरुख खान के स्टाइल का। और उसकी एक प्रेमिका थी। उसकी प्रेमिका हर रोज उसे एक दिल का तस्वीर, दिल का इमेज व्हाट्सअप करती थी। और हर रोज जब उसे पाता था अपने व्हाट्सएप पर, बहुत खुश होता था, फूले ना समाता था जब वो देखता था उस हार्ट को, उस दिल को। वो दिल धड़कता था, लपटप लपटप लपटप। खुश होता था उसको देखकर, बहुत खुश। और उस दिल में कुछ लिखा होता था, और लिखा हुआ था GIF, GIF। और उसे देखकर बहुत खुश होता था वो। उसको लगता था कि GIF का फुल फॉर्म होता है गर्लफ्रेंड। और सबको कहता था कि मेरी भी अपनी एक गर्लफ्रेंड है, मेरी भी अपनी एक गर्लफ्रेंड है। गधा था वो, गधा, डोंकी। राइट, GIF stands for graphics interchange format. GIF stands for graphics interchange format. तो ऐसे करके कई सारे एब्रीविएशन होते हैं जो हम लोग अपने हर रोज की जिंदगी में यूज करते हैं, एवरी डे। राइट, जब हम कोई Amazon प्राइम पे वीडियो देखते हैं या नेटफ्लिक्स में वीडियो देखते हैं, वी कॉल दैट प्लेटफॉर्म एज नॉट इंटरनेट, इट इज कॉल्ड एज OTT, ओवर द टॉप। मालूम था? नहीं मालूम था। राइट, तो ऐसे करके कई सारे एब्रीविएशन होते हैं। OTG मालूम है? नहीं मालूम है, ढूंढिए। राइट, हम लोग बोलते हैं यार फटाक से पैसा निकालना है, ट्रांसफर कर दें मुझे। तो दूसरे को कहते हैं यार अपना QR कोड, राइट, मुझे भेज दे, मैं भेज दूंगा। QR, QR द मोस्ट कॉमन वर्ड। डू यू नो द मीनिंग? मालूम है? नहीं यार, QR नहीं तो चलेगा, UPI दे दे मुझे। डू यू नो द मीनिंग फॉर UPI? डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ UPI? राइट यार, पढ़ने में दिक्कत होती है, PDF भेज दे, एग्जाम आ रही है, PDF तो भेज दे। क्या होता है? सो दीज आर वेरी कॉमन वंस जो हम लोग अपनी जिंदगी में हर रोज इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों का। यू नीड टू फाइंड द एब्रीविएशन फॉर ऑल दीज। क्लियर? इनके अलावा और कई सारे होते हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू डू इट एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क। राइट, आप घर पे हो या फिर ऑफिस पे हो या कहीं पर भी हो, जब भी आपको समय मिलता है, तो ऐसे जो शब्द जिसका हम प्रयोग हर रोज करते हैं, ढूंढे उसकी एब्रीविएशंस को और फुल फॉर्म लिखे और कमेंट बॉक्स में नीचे पर कॉपी कर दें, ताकि वो दूसरों को भी मदद हो जाए। क्लियर? सो प्लीज ट्राई टू फाइंड द मीनिंग, फुल फॉर्म, सॉरी, द फुल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स, these abbreviations. Clear? So this will be really helpful. I hope आपको समझ आया। Right? So loved up, GIF. Right? Not a girlfriend, but graphics interchange format. So इसी को लेते हुए we'll go further studying more. तो यही कहानी थी। इसी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तो लड़का लड़की के घर जाता है उसके पिता से बात करने के लिए। तो बैठते हैं, पहली बार मुलाकात होता है लड़का का लड़की के पिता से। तो एक दूसरे को देखते हैं, देखते देखते कुछ बातें होती हैं। तो एक झटके में फिर पिता पूछता है कि बेटा आप काम क्या करते हो? तो लड़का थोड़ा सा पीछे हटता है और फिर शाहरुख खान के स्टाइल पे बोलता है, अंकल मैं पूरा कमाता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ कि आपकी बेटी को खुश रख सकता हूँ, और आपकी बेटी को जो चाहिए मैं उसको दे सकता हूँ। तो लड़की के पिता ने पूछा, बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बस उसका जवाब दे दीजिएगा, मैं अपनी लड़की के हाथ आपके हाथ में थमा दूंगा और शादी कर लेते हैं। तो लड़का पूछता, अंकल सवाल किस विषय पर रहेगा? तो लड़की के पिता ने कहा कि सवाल उसी विषय पर रहेगा जिस पर आपको बहुत गर्व है कि आप पूरा कमाते हो, हर रोज पूरा पैसा कमाते हो, बस उस रुपये के ऊपर रहेगा आपका सवाल। तो लड़का बोलता, यार ये तो अपने ही है, चलिए पूछिए करके। तो लड़की के पिता ने एक सवाल पूछा उससे, एक सवाल पूछा कि बेटा 20 रुपया का जो
करेंसी नोट होता है हमारा, 20 रुपया का जो करेंसी नोट होता है हमारा, उसके पीछे में क्या इमेज है, क्या छवि है? इट इज कॉल्ड एज मोटिव्स, राइट? सो क्या है उसके पीछे में? तो लड़का पहले लड़की को देखता है, फिर उसके पिता को, फिर लड़की को, फिर पिता को, फिर लड़की को, फिर पिता को, और उठकर चला जाता है। ये नौबत आपको ना आए, ये नौबत आपको ना आए, ना ही जब आप लड़की के घर जाते हो, और ना ही जब आपके एग्जाम पेपर में ये सवाल पूछ ले कि होता क्या है उस करेंसी नोट के पीछे में, right? So we use these currencies in our day-to-day life almost, right? Starting from 10, 20, 50, 200, 100, 2000, we use it in our daily life. We need to know what is behind it, the image, the motive that is behind that currency note. Clear? So let's start. पहला, okay, मिटाना है। ₹1, ₹1, ₹1 के पीछे है सागर सम्राट ऑयल रिग। जो इमेज, यदि आपके पास करेंसी है तो आप देख सकते हैं या फिर गूगल पर टाइप कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड द सागर सम्राट ऑयल रिग, एंड दिस इज located at Bombay High. It's located at Bombay High, and this is somewhere off the coast of Bombay, nearly about roughly 176 kilometers. Okay, Sagar Samrat Oil Rig, Bombay High, off the coast of Bombay, 176 kilometers, and this was constructed in the year 1973. तो 1973 में कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय अ जापानीज फर्म कॉल्ड एज मित्सुबिशी, बाय अ जापानीज फर्म कॉल्ड एज मित्सुबिशी इन 1973। क्लियर? सो ₹1, और अब फिलहाल ये किसके अंडर में है? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। सो ₹1 has the image of Sagar Samrat oil rig located off the coast of Bombay, nearly 176 kilometers, somewhere at a place called as Bombay High. And this was constructed in the year 1973 by a Japanese firm called as Mitsubishi. और फिलहाल ये किसके अंडर में है? This is under ONGC, the Oil and Natural Gas Corporation. So this is ₹1 for you. अगर मैंने जल्दी मिटा दिया तो पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, उसके बाद उसको लिख लीजिएगा, राइट? नेक्स्ट, ₹10, ₹10, इसके पीछे में यू विल गेट द सन टेम्पल एट कोणार्क, सॉरी, द सन टेम्पल एट कोणार्क, ओडिशा, राइट? द सन टेम्पल, कोणार्क, ओडिशा। इस टेम्पल को बनवाने वाले व्यक्ति का नाम था नरसिम्हा देवा वन, नरसिम्हा देवा वन, right? And this temple is also called as the Black Pagoda by the Europeans, right? This temple is also called the Black Pagoda by the Europeans. This temple, the architect for the temple was Vishnu Maharana, right? So the architect was Vishnu Maharana, and there's another temple nearby which is called as Lord Jagannath Temple in Puri. Lord Jagannath Temple in Puri is called as the White Pagoda. Right, so Sun Temple, Konark, Odisha is on the reverse side of ₹10, built by Narasimha Deva I,
It is also called the Black Pagoda by the Europeans because it was on the tires, जो layers type दिखते हैं, जो dark complexion के थे, जिस कारण से उन्होंने ये नाम दिया था, the Europeans. And the architect was Vishnu Maharana, right? Vishnu Maharana was the architect. And the next temple which is nearby is the Jagannath temple at Puri, which is also called as the White Pagoda, right? So 10 रुपए के पीछे में केवल इतना है, ये एडिशनल नॉलेज है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, rupees 20, right? The new rupee 20 bears the image of Ellora Caves. Ellora Caves is in Aurangabad, Maharashtra, right? There are near about 34 caves. There are nearly 34 caves, and among these 34, 16th cave, the 16th cave is the largest, and it is called the Kalasha Temple. 16th cave is the largest, and it is called the Kalasha Temple. This temple was built by Krishna I. Krishna I was from the Rashtrakuta dynasty. Right? Krishna I was a ruler from the Rashtrakuta dynasty, and Ellora caves have 34 caves, and in Aurangabad, Maharashtra, it is the 16th cave is the largest among all 34 caves, and this 16th cave is called the Kalasha Temple. Right? So this is behind the 20 rupee note. और इसके अलावा अगर एलोरा केव्स के साथ एक और केव होता है जो बहुत कॉमन है, which is called the Ajanta caves, right? The Ajanta caves, again, it is in Aurangabad, Maharashtra. This has 29 caves. This has 29 caves. Clear? Rupee 20. So we have done with rupee 1, the Sagar Samrat oil rig of the coast of Bombay, built by the Japanese firm called as Mitsubishi, right now under ONGC, and was constructed in the 1973, right? Then we had rupee 10, the Sun Temple Konark, and it is called the Black Pagoda, and it was built by Narasimha Deva I. And now we said about rupee 20, which was built by Krishna I of the Rashtrakuta dynasty. And this Ellora caves has 34 caves, and cave number 16 is the largest, and this cave is called the Kalasha Temple. Okay. Next, rupee 50. This is the Humpy. See, the Humpy, the chariot. जो रथ होता है, बहुत बड़ा रथ है, राइट? तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे? दिस इज समवेयर इन द विताला कॉम्प्लेक्स. विताला इज अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स वेयर यू विल फाइंड दिस चैरियट, राइट? दिस इज अ चैरियट, अ ह्यूज चैरियट. क्लियर? तो इसको बनवाने वाले व्यक्ति का नाम था कृष्ण देवराया. कृष्ण देवराया. कृष्ण देवराया जब उड़ीसा गए थे युद्ध के लिए, तो उन्होंने सन टेम्पल का वो जो चैरियट था, द ह्यूज चैरियट, उन्होंने उसे देखा. He was very impressed, and he decided that he will build something like that in his own place. So he came down to Karnataka, then he built this chariot, right? And this is the chariot. This was the official vehicle, the Garuda, which is called, this is called the Garuda, the official vehicle, right? This was the official vehicle of Lord Vishnu, right? This was the official vehicle for Lord Vishnu, right? So rupee 50 के पीछे में हम्पी मिलेगा आपको. हम्पी द चैरियट. क्लियर? हम्पी द चैरियट. इट इज इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ विटाला टेम्पल. विटाला टेम्पल, राइट? अगेन दिस इज इन कर्नाटका. दिस वाज बिल्ड बाय कृष्ण देवराया. एंड ये जब उड़ीसा गए थे युद्ध के लिए, उन्होंने देखा और वहां से उसका जो इमेज था उसके हिसाब से उन्होंने बनाने की कोशिश की और उन्होंने बनाया. एंड दिस कॉल्ड द गरुड़ा. एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द गरुड़ा, व्हिच इज द, दिस चैरियट इज कॉल्ड द गरुड़ा, व्हिच इज द एक्चुअल the vehicle for Lord Vishnu. Clear? So rupee 50. Then rupee 100, right? 100 रुपया. 100 रुपये के पीछे में now we have something called as रानी की वाव. रानी की वाव इंग्लिश में कहते हैं क्वींस स्टेपवेल. Queen's Stepwell. It is called as Queen's Stepwell, and this is at Patan,
गुजरात, राइट, गुजरात में है, जगह का नाम है पठान, गुजरात। क्लियर? रानी की वाव, you'll find it in the 100 rupee note, 100 रुपए के पीछे में आपको मिलेगी। It is called the रानी की वाव, it's called as Queen's Stepwell in English, and it is at Patan, which is in Gujarat, rupee 100. Rupee 200, 200 रुपए का पीछे में will find something called as Sanchi Stupa, Buddhist monk residence kind of thing, right? So this Sanchi Stupa is in Madhya Pradesh, and it is believed that it was constructed by the great Ashoka, right? Right, we know that Ashoka had a battle which was called the Kalinga battle, Kalinga war, which happened in the year 261 BC, right? और माना जाता है कि कलिंगा के युद्ध के बाद अशोका ने युद्ध करना ही छोड़ दिया और अपने आप को बुद्धिज्म धर्म के अनुसार जिंदगी जीना या जिंदगी व्यतीत करना शुरू किया, एंड ही डाइड अकॉर्डिंग टू दी बुद्धिस्ट practice, right? So Sanchi Stupa is in Madhya Pradesh, which was constructed by Ashoka, and Ashoka was the person who was the main who played the main role in Kalinga war in the year 261 BC. So 200 रुपए के पीछे में we have Sanchi Stupa, right? So next is rupee 500, big currency comes here, rupee 500. इसके पीछे में we'll find the Red Fort, लाल किला. Red Fort was constructed by Shah Jahan. Red Fort was constructed by Shah Jahan, and the real name for Shah Jahan was a long one. Well, short way we'll remember it as Khurram, right? Khurram. Khurram. Khurram was the name given by his grandfather Akbar. So Akbar gave him this name Khurram, and later on the name was given as Shah Jahan. He took the name as Shah Jahan. Clear? So जैसे कि हम we also know that like Jahangir, right? Jahangir, his name was Salim, right? Sheikh Salim. तो बाद में फिर वो जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं. Clear? So similarly, Shahjahan, Khurram, Shahjahan, right? The name was given by Akbar. So anyways, rupee 500 bears the image of the Red Fort, which was built by Shah Jahan. Coming to the last one, rupee 2000, right? It bears the image of Mangalyaan, which was India's first interplanetary space mission. India's first interplanetary space mission. Clear? So these are very important क्योंकि again I say we use them in our daily life. हम अपने रोज की जिंदगी में इनका प्रयोग करते हैं, right? Most of us we use them. So this is really important that we understand the depth of things. We run for things that is too far away from us, जो हमसे बहुत दूर है. हम उसकी खोज में हमेशा रहते हैं, बट अक्सर हम उस चीज़ को भूल जाते हैं जो हमारे करीब रहता है. और एग्जाम्स में अगर आप एग्जाम्स की बात करें, ये सब अगर सवाल पूछ लेता है तो कहीं ना कहीं बाद में जाकर अपने आप को कोसेंगे कि शायद हम देख लेते हैं, बिकॉज हम लोग डेली यूज़ करते हैं. कभी आप बस में ट्रैवल करते हैं तो यू यूज़ 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ इन कॉमन, राइट? टिकट लेने के लिए पेट्रोल जब डालते हैं तो मिनिमम 200 रुपीज़ यूज़ करते हैं या 500 रुपीज़ यूज़ करते हैं. क्लियर? सो वी यूज़ देम इन आर डेली लाइफ, so we need to know them properly. Clear? So rupee 1 Sagar Samrat, rupee 10 Sun Temple Konark, rupee 20 Ellora Caves, rupee 50 we have Hampi, rupee 100 we have the Red Fort, rupee 100 we have Rani Ki Vav, rupee 500 we have the Red Fort, and rupee 2000 we have Mangalyaan. So these are very basic things and you need to know them clearly, right? So I hope the class was good. You understood कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, right? So everyone who is preparing yourself for the coming exams or the exams that will come in the near future, right? So every individual जो भी इस वीडियो को देख रहा है, please स्टडी को जो है ना थोड़ा enjoyment से करिए. Most of us we try to mug up क्योंकि बचपन से यही आदत हो गई है. पेरेंट्स ने भी ये आदत बच्चों में डाल दी है,
स्कोर करना है, मार्क्स टॉप करना है. देयर इज नथिंग लाइक दैट. सीरियसली, लाइक आप मार्क्स स्कोर करते हो, टॉप करते हो, दैट आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन that person or a person who is working out somewhere with the skills, right? So he is far better than the person who scored 90 or 95, I find myself, right? So when we compare, we should not compare generally, but यही होता है ये practical life में, clear? So what I really say is that make sure you have a practical knowledge of things, where skills, practical knowledge ये बहुत important होता है. Do not try to mug up things. When you play with them, when you know enjoy them the way you need to learn them, the way you enjoy and learn them, ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करेगा. तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने कहा कि कैसे आपको थोड़ा पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कितना मज़ा लेके आपको पढ़ना है, तो अगर आप इसको थोड़ा ट्राई करते हैं, आई होप देयर विल बी सम चेंज इन द नियर फ्यूचर. आज नहीं, कल नहीं, बट आने वाले दिनों में मैं ये आशा करूँगा कि आपकी तरफ से कुछ बदलाव आएगा पढ़ाई को लेते हुए, कि कैसे पढ़े, कैसे एंजॉय करके पढ़ सकते हैं, कैसे समझ के पढ़ सकते हैं. So I hope this video was really useful for you. I'll meet you in the next video, and until then, please make sure you have these notes with you. Learn it properly. Have a good day. Have a good sleep. And when you get up from your bed, make sure that you remember things that has been told. Or whenever you see this video, make sure you remember it for the very first time. I wish you all the best. Take care all. Thank you.